it's a content. So the students and teacher are not enjoying the social science. Therefore, there is a need to emphasize that the social science are essential to provide social, cultural, and analytical skills required to adjust to an increasingly interdependent world and to deal with the political and economic reality. So why we read a social science? What is the need to teach a social science in our students? So social science या social values cannot be taught without social science. ये आप सभी को पता होगा कि वैल्यूज जो है कभी भी टॉट नहीं किए जाते, वो कॉट किए जाते हैं। तो और ये कोई वैल्यूज जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। तो इट एनकम्पासेस विद द सोशल साइंस टीचिंग। It teaches the human values, social skills, and provide the opportunity for success. How to utilize the resources are in our country, in our the locality, and leads us to sustainable development. Social science tell us the social utility is a primary utility. To grow up as an active, responsible, and the reflective member of the society. To be a creative, to be a responsible, to be a reflective, and a critical member of the society. To learn to respect difference of opinion, lifestyle, and the cultural practices. To question what is a wrong and what is a right. To question what is a going on surrounding. To appreciate the value of Indian Constitution enshrines the equality, liberty, justice, unity, fraternity, integrity, diversity, and to build a socialist, secular, and a democratic society. To make a critical thinker. What issues to be addressed in a social science? It's a content loaded subject. There are 4 or 5 books. So there are so many issues related in a social science. So it's a heavy content loading subject. Plurality and local content. We are living in a diverse society. So we are dealing the plurality of a society, and in our class there are so many students with a different background, socio-economic background. So we deal plurality. The social science is a scientific rigor because it's a subjective subject, and the science teachers and the other teachers are thought that they are not a scientific. So it's a challenge to be a scientific temperament develop in our student. Normative concerns and the interrelationship among the other disciplines of our teaching. So, the other issue is a pedagogical issue of the social science. So, first of all, we need to understand about the pedagogy. There is a difference between the pedagogy and the methodology. So, we deal pedagogy first. So, pedagogy is emerged from a Greek word which means to lead a child, and its content is how to teach a best. So, जो भी हम चीज अपनी क्लास में यूज करते हैं, कि 3 चीजें हमारी बेसिकली होती है: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट मीन्स कंटेंट, हाउ मीन्स हमारी मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, और आपकी why means that is the objective and the learning outcome. So the pedagogy means the method and practice of the teaching, especially as an the academic subject or a theoretical concept. So pedagogy consists theory as well as practice. So pedagogy is the discipline that deals with the theory and the practice. The pedagogy is the function of a work of a teacher, teaching, and the art of a science of teaching, education, instruction method. So when we talk about the pedagogy, the pedagogy content consists the 3 aspects: animation, reflection, and action. Animation means the bringing life into a situation. This is often achieved through offering new experiences. So what is animation? If you are teaching a fundamental rights, after the discussion you float some cases regarding the fundamental rights. For example, you are a 13 years old student, and the government school denied to admission, which right violated by a school. So that is a animated picture, that is a animation bringing life into a situation, to provide a situation. The another aspect of the pedagogy is a second is reflection. So now give a chance to a student to express their view
either in a verbal or a written, and take feedback of the other students. That is a part of reflection. And the third aspect of the pedagogy is action. Now the student will discuss the case regarding the daily life. Now you will assess the student, how it's grasped or not he and she will do in action in their life. So this is a part of a affective domain. So the three part of the pedagogy: animation, create a situation; reflection, express the student express their view; and the action to apply in their daily life. So aspects to pedagogical treatment: first of all, we identify the concept of treatments, and another is the expected the specific learning outcomes. So हमें पहले पिक करके रखने चाहिए कि हमारे लर्निंग आउटकम आज के टॉपिक के क्या है. Methods, approach of the teaching learning, expected teacher and the students activity, and assessment strategy. तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, ये 5 एस्पेक्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट है. Pedagogical perspective to social science: multiple perspective and the representation of a concept and content need to be presented and encouraged. Goal and objective need to be derived by a student or in a negotiation with the teacher or a system. Teachers should serve in the role of guide, monitors, coaches, tutor, mentor, facilitator. The student should play a central role and a role in a mediating and a controlling learning. So, in the social science, NCF 2005 focuses on this aspect: the learning situation, environmental skill, content, and task should be relevant, realistic, and authentic, and they represent the natural complexity of the real world. Primary source of the data need used in the order to ensure the authenticity and the real world complexity. There are the two types of the data: primary and the secondary. If we are using a source of textbook or other source, that is secondary. When we talk about when we bring a resource person which express the real life world, and he and she will tell in a class, that is a primary source. Knowledge construction and not reproduction should be emphasized. That is an NCF 2005 focusing on the constructivism, not a reproduction of a knowledge. This the construction must place in an individual context and through the social negotiation, collaboration and experience. Knowledge complexity should be reflected in the conceptual interrelationness and the interdisciplinary learning. So collaborative and the cooperative learning and favored in order to expose the learner to alternative viewpoints. So you should give the chance to student to give a alternative viewpoint of a content. Scaffolding by the Vygotsky theory, ZPD, scaffold the students to bring out in a center from the periphery. So scaffolding facilitates the student to perform just beyond the limits of their ability. Social science teaching, social science teaching needs to be revitalized and helping the learner acquire the knowledge and skills in an interactive environment. The teaching of the social science must adopt the methods that promote the creativity, aesthetics, and the critical perspective, and enable children to draw the relationship between the past and present to understand the change taking place in a society. So most of the teacher and the students think that this history is not a relevant, but history is a more relevant because it is a link between the past and present to understand how the new things can shape. Okay. So the learner previous knowledge, constructions, beliefs, and attitude need to be considered in the knowledge construction process. Problem solving, higher order thinking skill, and deep understanding also need to be emphasized. Error provide the opportunity from the insight into the student's previous knowledge. So the teacher work is not a learn the things in the student. The teacher work also the de-learn the things, the prejudice of the student. So the error finding and error removing is also a part of a teacher. Exploration is a favored approach in order to encourage the student to seek knowledge
independently and manage the pursuit of the goals. Learner need to be provided with the opportunity for the apprenticeship learning in which there is an increasing complexity of a task, skill, and knowledge acquisition. So, what is the strategy for the teaching of the social science? These are some traditional teaching of the social science strategy. Today, we are discussing innovative teaching strategy. So, problem solving, dramatization, and role play are some the hitherto underexplored strategy that could be employed, but it's also a traditional strategy. We are using the problem solving approach. We are using the dramatization, role play. Teaching should utilize the greater resource of audio visual material, including the photographs, charts, and maps, and the replicas of the archaeological and the material culture. In order to make the process of the learning perspective, there is a need to shift from mere imparting of information to debate and discussion. There are the very innovative strategies. We are discussing more in the next further slides. Concept should be clarified to students through the live experiences of the individual and the community. We are discussing earlier. The approach to teaching, therefore, needs to be open ended without biases. हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि इस चीज का क्लोज एंड हो और ये चीज जो कही गई है वो फाइनल है. वो ओपन एंडेड भी हो सकती है, वो भी बिना किसी बायस के. टीचर शुड डिस्कस द Sir, डिफरेंट. sir, या. your your screen is not visible, so it's not shared. Kind of blank. माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? No, sir, it's not. It's blank. अदर पार्टिसिपेंट प्लीज रिस्पॉन्ड. इज इट विजिबल और No, नॉट? sir, it is not visible. Not visible, sir. Not visible. Okay, okay, okay. Again, sharing my screen. Please wait. Not visible? Not visible or not? It is visible, sir, now. It is Okay, visible. okay. Thank you so much. Yes, sir. So Thank you so much. teachers should discuss the different dimensions of the social reality in the class and work toward the creating increasing self-awareness amongst themselves and the learner. Some basic pedagogical tenets highlighted in the above discussion are: the student come to class with an established world. The student have their own experiences formed by the year of the prior experiences and learning. So we should encouraging them. Even as it evolve, a student world view filter all experiences and affects their interpretation of the observation. Again, sir, it is not visible. Okay, okay, okay. Is it visible or not to other participant? Is it visible or not? Sir, No, everybody is sir. putting in the chat. It's No, not sir. visible. It is not Okay, visible. I will check. Is it visible? Not visible? No, sir, not it. Other participant, please respond. Is it visible or not? Now Because it's in my visible, class, sir. not Now it visible. is visible, sir. Okay, okay, Now it is visible. okay, okay. Students, for a student to change their world view requires work. Students learn from each other as well as a teacher. Students learn better by doing, allowing and creating opportunity for all to have a voice, promote the construction of a new idea. So, these are the discussion about social science teaching and the theory behind the NCF and other things. Now we are discussing some innovative teaching strategy. So, firstly, we are discussion newspaper.
तो न्यूज़पेपर का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एवरी सोशल साइंस टीचर मस्ट रीड अ न्यूज़पेपर एंड इट यूज्ड इन अ क्लासरूम टीचिंग। इट्स द मोस्ट current of any printed source available. So we can use a newspaper as a teaching aid. It is a easily available resource in our school. You can teach or discuss different topics through the newspaper. For example, first of all, we are teaching part of the government. So you can give a newspaper in a group and give a task to identify the judiciary, legislative, and the executive work. The student will circle the news and discuss in their group, and group leader will present the news title under the three categories. Other student give the feedback, is it right or wrong? The teacher work as a facilitator. Teacher is doing on a blackboard under the categorization of the each news headlines into legislative, judiciary and executive. Then the other student tell is it right or wrong, and after the discussion teacher summarize the function of the government and the form of the different types of the government. So one of the use of the newspaper is, the second use of the newspaper is this, we are teaching we teach criminal and the civil cases in our class 8 NCRT textbook, judiciary, under the judiciary system. So there are the civil cases and the criminal cases. Student अ, वो अपना क्या करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादातर हमेशा रोट मेमोराइज़ कर लेते हैं, बट ईज़िली वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। So you can use the page 2 and 3 of the newspaper, which contain the civil and the criminal cases in the daily life. So now you again make a group of the student, and then you will say that identify the news related to civil cases and the criminal cases. तो वो एक बार इजीली अगर वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में जान लेंगे कि क्रिमिनल केसेस में कॉम्पनसेशन एंड जो सजा है वो दोनों की डिमांड होती है, और जो सिविल केसेस हैं उसमें केवल कॉम्पनसेशन की डिमांड है, तो वो इजीली न्यूज़पेपर में से ये चीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर को एक और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ द न्यूज़ एंड प्लेस द मैप ऑफ इंडिया एंड दे विल मार्क द लोकेशन। आप एक मैप लगाइए न्यूज़पेपर में से, कोई भी जो इंसिडेंट्स है उसमें से कहिए इसमें से अब आपको बताना है ये इंडिया के मैप में कहाँ होगा। तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं। अनदर इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी इज अ स्टोरी एज अ पेडागोजी। हम ये जनरली यूज भी करते हैं। जैसे यहाँ एक स्टोरी है कि देयर वाज अ फार्मर हु ग्रू अवार्ड विनिंग कॉर्न। ईच ईयर ही प्रोड्यूस्ड द फेस्टिवल गुड प्राइस एट अ लोकल फील्ड। वन डे अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम and learned something interesting about how he grew it. The reporter discovered that the farmer shared his seed corn with his neighbors. How can you afford to share your best seed corn with your neighbors when they are entering corn in a competition with your each year? The reporter asked, very surprisingly. Why, sir, said the farmer, didn't you know? The wind picks up pollen from the ripening corn and swirls it from the field to field. If my neighbors grow inferior corn, cross-pollination will steadily degrade the quality of my corn. If I am to grow good corn, I must help my neighbor grow good corn. He is very much aware of the connectedness of the life. His corn cannot improve unless his neighbor's corns also improve. So it is other dimension of the story. Those who choose to be at peace must help their neighbors to be at peace. Those who choose to live well must help others to live well. For the value of a life is measured by the life it touches. And those who choose to be happy must help others to find happiness, for the welfare of each is bound up with the welfare of all. The lesson for each of us is, if we are to grow good corn, we must help our neighbors grow good corn. But it's a story is not important. After the story, the discussion is a more important. So after the story, you can assess the student what they get learned. So there are the different question behind in this story. How did the farmer see his own welfare? So you are float the questions कि how did the farmer see his the own welfare? Farmer ने अपना welfare कैसे इस story में देखा? Which are the values reflected in the story?
और एक और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे वो एक्शन में भी लेकर आए कि सजेस्ट एनी अदर स्टोरी दैट यू कैन फील या फेल्ट इन योर लाइफ रियल लाइफ सिचुएशन। तो आपने कोई ऐसी स्टोरी कोई अपने सोसाइटी में देखी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज अ मोर इम्पॉर्टेंट इन अ स्टोरी एज अ पेडागोजी। That is a caselet. Another teaching strategy in a social science, that is a caselets. Caselets छोटे छोटे आप situations दीजिए स्टूडेंट्स को और उसके बाद उनसे उस सिचुएशन पे डिस्कशन करने के बाद क्लास में उसको ग्रुप डिस्कशन कराइए। जैसे यहाँ पे कुछ केसेस हैं। A Telugu speaking family has come to live in your neighborhood. They don't know how to speak Hindi properly. This caused them to have a trouble speaking with the community. What will you do in such a situation? That is a case. Suppose that Kerala, Bihar is flooded. What do you think you can do help the victims? You belong to be a particular religious community. Caselet number 3, a family belonging to a different religion has come to live in your area. They are celebrating their the special festival today. Will you join them in a celebrating this festival? Uh, Fourth caselet, imagine that that there is a shortage of water in your neighborhood. A water tanker has been arranged by the government so that everyone can get the water. But when the tanker arrives, people collect more and more water without a line, due to which many people do not get water. What can you do in such a situation? You are traveling in a bus, train, plane. You are a vegetarian, but the family sitting next to you starts eating their non-vegetarian food. What would you do in such a situation? The family in my neighborhood eats fish every day. When the starts cooking, there is a smell around, but there is a situation. So there are different caselets जो अलग अलग इश्यूज को टैकल करते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे केसलेट्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन केसलेट्स एंड ब्रिंग आउट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सो इट्स another dimension of teaching a social science. Case studies in a social science. It is another dimension of teaching social science innovative strategies. Sanjay Gandhi is not a politician. Sanjay Gandhi Bagla. Sanjay Gandhi Bagla in Uttarakhand started the planting trees by the roadside when he was 23 years old. He said, I used to find the heat in the Dehradun unbearable, whereas walking in my village was a soothing affair. The difference was a tree. I asked the forest department to give me trees, and trees got to a roadside plantation. They provide me trees without any tree guard. I planted the tree, but most of them were destroyed by the people, he recalled. The failed project helped him discover his love for trees. He went back to the forest department official with a proposal. Provide him land to plant trees. They obliged, but with the barren land of 27 acres, he recalled at the moment many of his friends discouraged him from taking up the venture, telling him he would fail. He did initially, many of the trees just dried up, he said, but he kept recharging the soil and planting trees. And after the working for over a decade, Bagla has given a Dehradun a man-made dense forest city. In the midst of the developing the forest, Bagla would visit nearby villages with a message to plant tree and save the environment. I just asked for the food and the shelter. In this, the hills, everyone is happy to oblige. He said his modus operandi was a simple: inspire the village youth to plant trees and take care of them. He planted more than the 10 lakh tree till date. So it is a very impressive case study in the social science, and we are using in environment conservation, tree plantation, afforestation. So the question are very important in this case study. How can you contribute to your locality in making green? Make a plan for this. Another question is make a plan for how can we make our school as a dustbin free or green school. तो हम इस तरीके की कुछ सिचुएशन लेकर भी केस स्टडीज को अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक बहुत सारी केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे दशरथ मांझी जिसको हम माउंटेन मैन कहते हैं, जिसने एक पहाड़ को में से रास्ता निकाल दिया कई किलोमीटर बचाने के लिए। एक अकेले आदमी ने पहाड़ से रास्ता बना दिया।
तो इस तरीके की केस स्टडीज हमारे लिए इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज की तरह से यूज हो सकती है। Another teaching strategy is a survey sheet. Survey sheet, we can use community survey as well as we can use the individual survey. But this survey sheet on a carbon footprint we are using इन क्लास। सो इसमें हमने कुछ कैटेगरीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। एक्टिविटी, रैंकिंग, रैंकिंग ग्रुप वन, रैंकिंग ग्रुप टू, रैंकिंग ग्रुप थ्री, रैंकिंग ग्रुप फोर, रैंकिंग ग्रुप फाइव। सो वी डिवाइडेड द ग्रुप into five part. You will divide the class into a five or according to your situation. Group give a sheet and do the ranking with the discussion. The each group will present the ranking. Teacher will play as a facilitator, and at the end he or she consolidate the final ranking. You can use the survey sheet as a home task also. तो इसमें बता रखा है, जैसे पहला पॉइंट है कि प्लास्टिक बैग के बर्न होने पर मतलब आपको इसको रैंकिंग करना है कि कौन से ज्यादा कार्बन रिलीज होगा। तो स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में करेंगे इंडिविजुअल, फिर सेकंड ग्रुप करेगा, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, और सबके आपस के डिस्कशन के बाद टीचर फाइनल जो है वो ग्रुप जो है इसकी रैंकिंग करेगा। तो इस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट्स को हम इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरीके की जो सर्वे शीट है वो आप भी इजीली अपने स्कूल में बना सकते हैं। स्टोरी इम्प्रेशन, दिस इज अनदर टीचिंग इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। इसमें हम एक तो स्टोरी टाइटल बच्चों को कहते हैं, कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ समरी बनाने को कहते हैं, और कुछ मेन स्टोरी कहते हैं। तो गिव सम वर्ड्स एंड से टू द स्टूडेंट्स इमेजिन and write a story with the help of a given words. For example, you give the words food, culture, festival, language, respect, coexistence. So ये हमने कौन सी स्टोरी बनाने के लिए सोचा होगा? डाइवर्सिटी इन इंडिया। जैसे आप कुछ और कह सकते हैं, जैसे गांधी जी की बायोग्राफी आपको लिखवानी है, तो आप उसमें फनिक्स स्कूल, इंडिगो, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा, सॉल्ट मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स दे सकते हैं जिस पर बच्चे खुद ही एक पूरी स्टोरी बना सकते हैं। तो यू कैन यूज सम हिंट वर्ड्स एंड द स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ओन स्टोरी। तो इट्स अनदर डायमेंशन टू टीच द सोशल साइंस बाय अ स्टोरी इम्प्रेशन। द पिक्चर शोज द माइंड मैप। आप इसमें देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का, एम आई ऑडिबल और नॉट? मेरी आवाज सब तक आ रही है? Okay, thank you. So this is a picture of the mind mapping, science of the global warming, and there is a different nerves, 1750 industrial revolution, greenhouse effect. तो इस तरीके की माइंड मैप को आप यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में। बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आप पूरे माइंड मैप से समझा सकते हैं। Lifeline of Indian economy in the geography, class 10. You can use the mind map. Metallic and the non-metallic minerals in the geography, class 10. You can use the mind map as well as the concept map. This is a concept map. The water needed by living things include plants, animals, mammals, molecules, ocean, heat, sun, states, solid, liquid and gas, solid, ice, cool. तो इस तरीके से आप concept map बना सकते हैं, चाहे वो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक चैप्टर से रिलेटेड हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट मैप एंड द माइंड मैप? Concept map is a top-down approach, and the mind map is a image-centered radical diagram and represent the connection between the positions. Concept map is to show the systematic relationship among the sub-concepts related to one main concept, and the mind map is a show subtopics of a domain in a creative manner. Suitable for a classroom teaching in a concept map, self-study and revision. So आप इसको easily use कर सकते हैं। Another dimension is a pictorial. Pictorial is a very important aspect of teaching of a social science. You can use the newspaper cutting, you can use the drawing, you can create their own drawing, poster and animate the things, the situation. जैसे इसमें दिखा रखा है difference between the equality and equity. So student can easily understand the concept of equality and equity. Equality means when we distribute the resources equally and
The equity means when we distribute the resources according to their needs, that is a equity. लेकिन ये पिक्चर देखते ही एक बार में ही स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज इक्वालिटी एंड व्हाट इज अ इक्विटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि व्हेन आई टीच द रीजनल एंड पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर इन क्लास 10 political party chapter, I had brought and kept some picture of the regional and national leader. For example, the Naveen Patnaik, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी एक्सेट्रा। तो उनके आप पिक्चर्स न्यूज़पेपर्स में से ले जाइए, उन पिक्चर से पूछे कि ये पूरे देश में ये पार्टी है या नहीं है, तो स्टूडेंट इतना अंडरस्टैंड करके फिर आप उस कॉन्सेप्ट पर लेकर आ सकते हैं। तो पिक्टोरियल इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। This is a share pair circle strategy. Share pair circle is another name of the outer and inner circle activity. You can give the sum answer sheet to an inner circle and question sheet to an outer circle. Circle will move. Each student will make pair with the right question with answer. जैसे अगर आपको states और states capital समझाना है या कौन सा एयरपोर्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है वो आपको बताना है, या गांधी जी के मूवमेंट्स का सही टाइम क्रोनोलॉजी आपको करानी है, तो ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक स्टूडेंट का सही पेयर नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से पेयर बनते जाएंगे और स्टूडेंट्स एनालिटिकल स्किल के थ्रू, क्वेश्चनिंग स्किल के थ्रू, इमेजिन स्किल के थ्रू वो अपना पेयर सेलेक्ट करेंगे। Another teaching strategy is a panel discussion. तो पैनल डिस्कशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ हम टॉपिक देते हैं और बाकी स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो शुड इंडिया कुछ हम टॉपिक ऐसे दे सकते हैं जैसे इंटरेस्टिंग जो हो सकते हैं, शुड इंडिया कंटिन्यूइंग द एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, you can give some questions to a student which human values can keep a check on misuse of the nuclear energy. तो आप पैनल डिस्कशन को पॉजिटिवली ही अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसे होते हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचिंग रिसोर्स के रूप में। और उन स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम भी आपको पता चलती है और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम भी आपको पता चलती है कि वो आप कहाँ लैग रहे हैं। Another teaching innovative teaching strategy is a timeline. तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज इन टाइमलाइन में हिस्ट्री, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स शुरू है टाइमलाइन टाइमलाइन इन्फोग्राफिक टेम्पलेट भी अलग अलग दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से हम जैसे हिस्ट्री में हम चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले भी टाइमलाइन बनाते हैं, कौन सा गाड़ी लेके आएंगे, एंड के बाद भी आप टाइमलाइन को कौन सी गाड़ी लेके आएंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी। इसके अलावा डेविल एडवोकेट, तो पूछ के चलो डैडी से, नहीं आप पूछेंगे। इसमें बता सकते हैं कि और कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हम टाइमलाइन के थ्रू कर सकते हैं, कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो टाइमलाइन के थ्रू हम समझा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डेविल एडवोकेट। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द डेविल्स एडवोकेट मेथड। डेविल एडवोकेट मेथड क्या होता है? गेटिंग योर स्टूडेंट टू कंसीडर द इशू फ्रॉम द ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव। For example, a dialectical approach in which the teacher purposes or defends an extreme or unpopular viewpoint used to initiate or stimulate a discussion or a debate. For example, in a class on an environmental issue, the teacher might suggest that the nearby wetlands be drained because of the many mosquitoes that breed there. The strategy is very useful for the topic having more concern with the society. तो टीचर यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट को सही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग निकल कर आती है, तो उसके लिए डिफरेंट आर्गुमेंट स्टूडेंट देता है कि कौन सा पॉइंट सही है या नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि एक टीचर अगर ये सजेस्ट करता है कि अगर उसके आसपास के नालों को या गंदे पानी को इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि बिरयानी दे दो, प्लेट लगा के रहते हैं, बिरयानी दे तो दो। इस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके स्टूडेंट्स के डिफरेंट
जो तरीके हैं वो हम ओपिनियंस हैं वो हासिल करें. वी डिस्कस द न्यूज़पेपर एज अ टीचिंग एड, बंद कर दो ना. स्टोरी एज अ जाओ वहीं पेडागोजी, जाओ. केस प्लेट्स, मूवीज. तो एक छोटी सी हम वीडियो देखते हैं कि हाउ कैन वी यूज द मूवीज इन आवर टीचिंग सोशल साइंस. सो प्लीज वेट. Is it visible? Is it visible or not? Yes. Okay. Have you seen this movie? Harry Potter. Very famous movie. What is the name of the movie? Harry Potter. We have discussed the case study, survey method, story impression, pictorial, mind mapping, concept mapping, share pair circle, panel discussion, timeline, पावर वॉक. तो आज हम थोड़ा एक छोटी सी और वीडियो देखते हैं पावर वॉक को समझने के लिए कि व्हाट इज द पावर. वेट. Some people are born into families where they have to walk miles just to get water. All I have to do is turn on the faucet. I think privilege is when some people have something and other people don't have things. And I feel privilege is something that you don't even really have control over. I think it'd be silly for me to say I don't have a fair amount of privilege, considering like the country I live in, the job I get to do, and the college I was allowed to go to. Most people I know will help me end up somewhere towards the front, but I'll take a few steps back from being gay. I don't think I'll make it to the front. I think I'll maybe be in the middle. That's just the gut feeling I have. If your parents work nights and weekends to support your family, take one step back.
If you can show affection for your romantic partner in public without fear of ridicule or violence, take one step forward. If you were embarrassed about your clothes or house while growing up, take one step back. If you have ever been diagnosed as having a physical or mental illness or disability, take one step back. If you've ever been bullied or made fun of based on something you can't change, take one step back. If you get time off for your religious holidays, take one step forward. If you came from a supportive family environment, if you can see a doctor whenever you feel better, if you are able to move through the world without fear of sexual assault to your education, there were more than 50 books in your house. So these are your final positions. I think it felt kind of strange for everyone. It's a hard thing to discuss or even reflect on. It was very awkward. I think when you can represent it so visually like this, immediately, it definitely makes sense more. I think we were like all joking around at the beginning. It was pretty lighthearted. As soon as the questions started coming in, the shifted immediately, and we all kind of there was silence. Just looking back and seeing like a bunch of people behind you is not a good feeling. Like, This is a very interesting method using in the social science to understand the students, the equality concept, the justice concept, the liberty concept. तो हम इसको किसी भी तरीके से अपनी क्लास के नीड के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा जो है वो है बुक कंस्ट्रक्शन। बुक कंस्ट्रक्शन मीन्स क्रिएटिंग अ बिग बुक is a king of assignment, very useful for a social science teaching that it's a long time work or a strategies to use. In the strategy, provide some topic of the students in a group and then let me build a book. Group will divide the work themselves among the members. This work will be very constructive and with full of effort to the students. तो हम इस तरीके से बुक कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। एक हम नोटबुक के पीछे भी एक वोकैबलरी बिल्डिंग का काम भी कर सकते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, और उसी वोकैबलरी को अगली क्लास में भी कंटिन्यू करें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की ब्यूटी उसकी वोकैबलरी होती है। सोशल साइंस में अगर आगे लैग करता है तो हम बुक कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक वोकैबलरी बुक भी बच्चों के साथ डेवलप करा सकते हैं, क्योंकि नोटबुक के पीछे जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो वहाँ पे वो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को लिखकर वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। तो इस तरीके की टेक्निक को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में। इसी तरीके से और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कुकिंग। कुकिंग मीन्स द हैंड्स ऑन एक्टिविटी दैट help the students make connection between the two concepts of a social science. For example, fundamental rights and the fundamental duties. Students will understand both with the relation to each other to their new understanding. In this strategy, teachers need to take care about the concept he or she is choosing for the cooking. There must be relationship between the selected concept. तो इस तरीके से और भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे अभी हमने डबल सेग्रीगेशन की बात की। फाइंड द फिफ्थ टेक्निक मीन्स द टीम एक्टिविटी वेयर द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट राइट 2 true statements and 1 false statement then challenge other teams or a teacher to find the fifth। कि 2 स्टेटमेंट सही गलत है और एक सही है, उसमें स्टूडेंट और टीचर को हम कहते हैं वो ग्रुप, कि आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। In the same way, many set of the statement or the short explanation can be written and then can be used in the mentioned above। तो इस तरीके की टेक्निक्स हैं। इसी तरीके से एक टेक्निक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ग्रैब बैक या गैप्स। एक गैप्स टेक्निक की अभी हमने बात की है। गैप्स टेक्निक्स का मतलब है स्टूडेंट्स आर गिवन सेंटेंसेस और सीक्वेंस विद द गैप्स, मिसिंग वर्ड, मिसिंग नंबर्स और मिसिंग सिंबल्स and are asked to fill in the gaps। These gaps can be in the form of completing the paragraph on the basis of the student. This is look like a story impression. Understanding about the concept, the paragraph needs to be linked with the given uncompleted sentences. Another technique is the OPV technique. This is a very important technique. This strategy deals with the perspective of others. Provide any topic to the students and let them understand each other's perspective. Create pairs for the activity and other discussions. Let the student present the other perspective of the topic.
इसी तरीके से पोएम कंस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे एक मैं आपको छोटी सी एक पोएम आपको दिखाता हूँ जो मैंने लिखी थी किसी टाइम पे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आई कैन शेयर। वेट। माय स्क्रीन इज विजिबल। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है आपको? Am I audible or not? तो एक मैं छोटी सी ये कविता वैसे हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी में स्टूडेंट्स ने तो उनके लिए लिखी थी। फेडरलिज्म हमारा एक चैप्टर है क्लास 10 में पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ 2 पैरा। वैसे मैंने पूरे चैप्टर को लेकर लिखी थी। जैसे ये है कि एक पोएम है छोटी सी। 2 या 2 से अधिक स्तर पर काम करती जब सरकार, कानून बनाने प्रशासन पर सबका अपना अपना अधिकार, सबके अधिकार सुनिश्चित रहते, सबके अस्तित्व सुरक्षा को मिले गारंटी, कोई अकेले मौलिक अधिकारों को नहीं बदले, इस पर बनी है सहमति। विवाद अगर हो सरकारों में, न्यायालय फिर निर्णय लेता, वित्तीय स्वायत्तता मिलती रहे, इसका प्रबंध पूरा है रहता। अनेकता में एकता, यही है संघवाद की विशेषता। क्षेत्रीय विविधता, अखंडता, सुरक्षा सम्मान, सुंदर इसकी विशेषता। संघवाद की सफलता की कुंजी छिपी लोकतंत्र के अंदर, विविधता का सम्मान, यही लोकतंत्र का आधार। दर्पण। भारत की संघीय परीक्षा हुई भाषा नीति को लेकर 24 भाषाओं के सम्मान से सजता देश का भाषाई कलिंग। भाषाई स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर संविधान में कई उपबंध। श्रीलंका से सबक ले लिया, सबकी अपनी भाषा अपनाने को स्वतंत्र। सत्ता में संघर्ष न हो, इसका रखा है पूरा ध्यान। केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची बनाकर राज्य को मिला पूरा सम्मान। स्थानीय शासन को बनाया शासन में भागीदार, स्थानीय समस्याएं झट हल होती, यही पंचायती राज आधार। सबको साथ लेकर चलना संघवाद का मंत्र, सत्ता का विकेंद्रीकरण, भारत ने दिया अद्भुत शासन। तो इस तरीके की कुछ पोएम मैंने क्लास 1 टू क्लास मतलब क्लास 10 के चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन सब पे पोएम बनाई थी, जिससे कभी स्टूडेंट्स को रिवाइज करना हो तो उसके लिए ईजी हो जाता है। स्टूडेंट्स ओनरशिप इज़ अ वेरी easy technique, alternative perspective, cartoons we have earlier discussed. So इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अपना के अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और छोटा सा और एक आपके साथ पोएम एक और शेयर करूँगा जो CBSE की कलेक्शन की है, जिसमें सॉन्ग्स को किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज़ किया। So there are so many techniques using in a social science to make our class very interesting. So now the time of the question session. Excuse me, sir. You can ask a question. Yeah. Excuse me.
Can you Yeah, share any of the site or link where we get all these videos and reviews? sure, sure, sure. Now the question time, you can ask question. Sir, could you please tell me again about equality and equity? Equity means you said that it is a need of a person. Equality and equity, okay, got it to your point. Equality means when we distributed the resources equally, and equity means when we distribute the resources according to their need. आपने उस पिक्चर में देखा होगा कि फर्स्ट पिक्चर में सभी को मैच नहीं दिख रहा था। तो जिसको जितनी नीड है अगर हम उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो चीज जो है वो इक्विटी कहलाती है। So reservation is a part of equity. So we using equity path to reach the broad target equality. तो इक्विटी के रास्ते से ही हम इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं। Any other question? Thank you so much to listen very patiently and very interesting question in your chat box. Thank you so much. So where do we get these videos and also? Is there a Okay. site?